Good morning, students. I am Simuta from JPPS. Now, student, we start exercise 8.1, question 1. Exercise 8.1, question 1. Question 1 is in triangle ABC. Student, we have given a triangle ABC. Right angle at B. Student, आपके पास triangle given है ABC. It is right angle at B. Angle B भी क्या आपके पास right angle है. BC is 24. सॉरी ए बी इज 24. ए बी की वैल्यू क्या आपके पास 24 है. बी सी 7. बी सी की वैल्यू क्या आपके पास 7 सेंटीमीटर है. डिटरमाइन साइन ए कॉस ए. स्टूडेंट वी गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी विच इज राइट एंगल एट बी. ए बी इज 24, बी सी इज 7. फाइंड साइन ए एंड कोस ए. स्टूडेंट 4 एंगल है आपके पास. एंगल ए फॉर्म हो रहा है. 4 एंगल है. ए बी इज base, BC is perpendicular and AC is hypotenuse. स्टूडेंट आपके पास एंगल फॉर्म हो रहा है. एंगल ए के लिए ए बी क्या है आपके पास बेस है, बी सी क्या है परपेंडिकुलर है एंड ए सी क्या है हाइपोटेनस है. स्टूडेंट वी हैव गिवन बेस परपेंडिकुलर एंड वी फाइंड हाइपोटेनस. स्टूडेंट आपको बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, वी फाइंड हाइपोटेनस बाय पाइथागोरस थ्योरम. Square of hypotenuse equal to square of base plus square of perpendicular. Square of hypotenuse equal to square of base plus square of perpendicular. Here hypotenuse is AC, so square of AC, base is AB equal to square of AB plus perpendicular is BC, BC square. So AC square, value of AB is 24, 24 square. Value of BC is 7, 7 square. So AC square, square of 24 is 576. Square of 7, 49, which is 625. AC equal to square root of 625, which is 25. So student, hypotenuse is 25. Now we find sin A. Student आपको क्या फाइंड करना है sin A. What is sin theta? What is sin theta? Sin theta is ratio of perpendicular and hypotenuse. It means P upon H. P upon H. Here perpendicular is BC. 4 angle A. 4 angle A. AB is base. BC is perpendicular and AC is hypotenuse. So student sin A, what is sin A? Ratio of perpendicular and hypotenuse. Perpendicular is 7, hypotenuse is 25. So student sin A is 7 upon 25. Now we find cos A. What is cos A? Cos is ratio of base and hypotenuse. Cos A is defined as B upon H. 4 angle A, B is AB, base is AB, hypotenuse is AC. So 24 upon 25. Same student, we find tan A. What is tan A? Tan A is ratio of base, ratio of perpendicular and hypotenuse. It means P upon perpendicular upon base. It means P upon B. What is tan A? Tan is ratio of perpendicular and base. It means tan A equal to P upon B. 4 angle A, P is 7, perpendicular is 7, base is 24. So 7 upon 24. Now we find sec A. What is sec A? Sec is ratio of hypotenuse and base. It means H upon B. 4 angle A, H is 25, B is 24. So 25 upon 24. Same cosec A, it means cosec theta. What is cosec? Cosec is ratio of hypotenuse and perpendicular. It means H upon P. 4 angle A, H is 25, P is 7. So 25 upon 7. Next, cot A. What is cot? Cot is ratio of base and perpendicular. 4 angle A, cot is B upon P. 4 angle A, B is 24, P is 25. So 24 upon 25. So we find all trigonometric ratio for angle A.
स्टूडेंट आपने एंगल ए के लिए क्या किया, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड किए, सेम वी फाइंड फॉर एंगल सी, साइन सी, फॉर एंगल सी बी सी इज बेस, एंगल सी के लिए आपके पास क्या है, बी सी बेस है और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड ए सी क्या है, हाइपोटेनस है. व्हाट इज साइन सी, साइन इज पी अपॉन एच, फॉर एंगल सी पी इज 24, एच इज 25. Cos A, what is cos? Cos is ratio of base and hypotenuse. It means B upon H. For angle C, base is 7, hypotenuse 25. Same tan C. For angle C, what is tan? Tan is ratio of perpendicular and base. It means for angle C, perpendicular is 24 and base is 7. So 24 upon 7. Same student, sec C, for sec C, C for angle C, what is sec? Sec is ratio of hypotenuse and base. It means H upon B. For angle C, H is AC, B is 7. So 25 upon 7. For cosec C, cosec is ratio of hypotenuse and perpendicular, H upon B. For angle C, H is 25, P is 24. Now cot C, what is cot? Cot is ratio of base and perpendicular. What is cot? Cot is ratio of base and perpendicular. For angle C, BC is base, AB is perpendicular, so 7 upon 24. So student, we find all trigonometric ratio for angle A as well as angle C. Student, for cot A is B upon P. Here B is for angle A, B is 24, P is 7. So 24 upon 7. So student, cot A is 24 upon 7.